Hi. Okay, so the fourth chapter. The name of this chapter is King Bharat. Bharat, King Bharat, जिनके ऊपर हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नाम रखा गया है भारतवर्ष. अच्छा, before I begin this chapter, I would like to clear a concept. The concept of region and religion. The difference between region and religion. मतलब एक geographical है और एक belief system है. Region has to do with geography and religion has to do with a belief system. Example, I am a Bombayite. So people will know that this will be his mannerisms. कि भाई Bombayite, but Bombayitism is not a religion or something. Similarly, Maharashtrian, Gujarati, Punjabi, they are all cultures of a region. Islam, Christianity, Sikhism, Jainism, Buddhism, these are religions, it's a belief system that you are following certain things. So religion and region are two different things. We should not mix the same. Having said that, कहानी का तो कोई religion नहीं होता. और ये जो महाभारत है, how did this tale come into being? हाँ, region होता है, तो ये भारतवर्ष से आई है. now भारत नाम कैसे पड़ा इसका? So that's the story of the king भारत. So let's begin. एक सूर्यवंशी महाराज कौशिक, he decided to leave his kingdom. He was a सूर्यवंशी and he decided to leave his kingdom. कहता है मैं ऋषि बनूंगा और मैं ऋषि बन के तपस्या करूँगा. तपस्या करके मैं बहुत सारी ताकत जमा करूँगा. I'll have lot of magical powers. I'll gain a lot of powers from God. तो अब ये देख के whenever something like this happens, someone tries to be very strong, इंद्र भगवान becomes very scared. कहता है भाई मेरे सिंहासन पे खतरा है. जैसे ही ये स्ट्रेंथ गेन करेगा सबसे पहले आके मुझे अटैक करेगा. So वो he's very smart, very cunning at the same time. So he used to think of ways that the person should not achieve his goal of tapasya. Kaushik had taken a vow of celibacy that he will not have sex. ब्रह्मचारी रहेंगे वो और जंगल में तपस्या करेंगे सिर्फ. Now Indra sent one of his saras, Menka, down to the rishi and he said that you go and you make sure that you have sex with him and you break his vow of celibacy. Menka went down. That it was a challenge for her, and her passionate dance could not be resisted by Rishi Kaushik. They made passionate love, and the result of that love was a girl, a child, a small baby girl. Now Rishi Kaushik abandoned the child because she reminded him of nothing but his failures, and Menka just left, abandoned her because she didn't care. Now the abandoned small baby is just lying there in the forest, and obviously a few vultures came down. उन्हें कहते हैं शकुन बर्ड्स. vultures को हिंदी में कहते हैं शकुन. तो जो शकुन बर्ड्स ने उनको पूरा घेर लिया. अभी दूर एक ऋषि कनवा जा रहे थे. उन्होंने देखा कि ऐसे बहुत सारे vultures वहाँ पे बहुत सारे शकुन वहाँ पे जमा हो गए. तो ही वेंट ओवर देयर, देखा तो एक छोटी जिंदा बच्ची थी. तो उन्होंने इस बर्ड्स को हटाया, उन्होंने अपने सीने से लगा लिया उसे और उसे नाम दिया शकुंतला. शकुन के नीचे, शकुन के शेल्टर में जो उनको मिली, तो इस तरह से उनका नाम पड़ा शकुंतला. Now he took Shakuntala and raised her as her own daughter. जैसे बड़ी हुई, she turned out to be a very beautiful woman. She was the love child of a prince, Rishi, Suryavanshi Rishi, Kaushik, and an Apsara. So you can just imagine how beautiful she must be. So अब वो बड़ी हो गई. One fine day, ऋषि कनवा went for his tour. वो क्या किंगडम्स में जाते रहते थे, उनको ऋषियों को बुलाते रहते हैं for hymns and chants and for story telling. सो ऋषि कनवा अपने टूर पे चले गए ऐसे ही. एंड वहाँ पर आ गए दुष्यंत. अब दुष्यंत कौन है यहाँ पे? द लीनिएज कम. दुष्यंत इज पुरुरुवाज डिसेंडेंट. पुरुरुवा फ्रॉम द लास्ट चैप्टर. नाउ दुष्यंत केम टू सी ऋषि कनवा बट ही कुड नॉट फाइंड हिम देयर. वहाँ पे उनको मिले नहीं, पर उनको दिख गई शकुंतला, द ब्यूटिफुल शकुंतला. ही फेल इन लव विथ हर इंस्टेंटली. प्रपोज फॉर मैरिज, बट कहती पापा यहाँ पे है नहीं, फादर इज नॉट ओवर हियर. तो ही सेड के बट ही कुड नॉट कंट्रोल. ना कहता है कि हम लोग गंधर्व विवाह कर लेते हैं ना. गंधर्व, द सेलेस्टियल म्यूजिशियंस, ना दे आर लवर्स. गंधर्व विवाह इज सिंपल. इफ टू लवर्स आर एक्सेप्टिंग दैट वी टेक ईच अदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, इट्स मैरिज इनफ. दैट्स इट. नो अरेंज मैरिज, नो टाई अप्स विद किंगडम्स और व्हाटएवर. नहीं, बस शादी प्यार से होती है वहाँ पे. तो गंधर्व विवाह इज दैट फॉर्म ऑफ मैरिज. सो ही सेड कि चलो हम लोग गंधर्व विवाह कर लेते हैं. So she said okay, in her innocence she said okay. तो नेचर को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने शादी कर ली. They made passionate love for weeks, but Kanva did not return. Now he said that अब मुझे जाना होगा. Dushyant had to leave back for his kingdom, and he said that it's not right that I take you
in the absence of your father. तो कहता है कि I'll come back, let your by then your father will also come back. तो मैं जाता हूँ, मैं वापस आऊँगा. अब वो चले गए और थोड़े दिनों में ऋषि कन्वा वापस आ गए. जब ऋषि कन्वा वापस आए तो he could see that she was visibly pregnant. She told him about दुष्यंत. तो खुश हो गया. He said, wow, मेरी बेटी सेट हो गई, सेटल्ड है with a king that also पुरुरुवा के descendant दुष्यंत. So he got really happy. But as days passed, Dushyant did not come back. They made amends with the fact that he's not going to come back. So they raised the child on their own. उस बच्चे का नाम रखा उन्होंने भारत. Now as भारत grew, थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ को पूछा about the father. And now Rishi Kanwa said कि now it's time that he knows his father. So you go with him and introduce him to your father. So in her innocence she went. She went over there. भरे दरबार में पहुँच गई वहाँ पे कि भाई मैं शकुंतला हूँ, हमारा गंधर्व विवाह हुआ है और ये आपका बच्चा है भारत. एंड एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग. कहते गंधर्व विवाह मतलब नेचर को मद्देनजर रखते हुए कौन सा. एंड दुष्यंत ऑल्सो डिड नॉट रिकग्नाइज हर, मतलब उसको इनकार कर दिया. कहता आई डोंट नो यू भाई. नाउ हार्ट ब्रोकन शकुंतला रोना आ गया बेचारी को, तो रोने लग गई. तो अचानक ऊपर से आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में मीन्स एन एको केम, अ वॉइस केम फ्रॉम द हेवंस. And it stated everything that had happened. Dushyant was embarrassed. But then he apologized and then Bharat को उसने अपनाया और फिर Bharat became the next king and then he took over the Indian subcontinent and that's why it is now known as Bharatvarsh because it was ruled by King Bharat, descendant of Pururuva. So this concludes the chapter of the name of Bharatvarsh. Also another thing about symbolism. Buddha got married to Ila Suryavanshi. The descendants are Chandravanshis. Even Kaushik Suryavanshi. Suryavanshi is child Shakuntala Suryavanshi. Suryavanshi gets married to Chandravanshi Dushyant and Bharat is born. Again, Chandravanshis. So repeatedly there's a pattern that a Chandra marries a Suryavanshi, Chandravanshi marries a Suryavanshi and then the descendants are come. And there is a known fact that the moon derives its light from the sun. So, food for thought. Thank you so much for listening. Thank you so much.